हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म। आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। आज हम चित्राल नदी के बारे में जानेंगे। चित्राल नदी पाकिस्तान के उत्तरी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। चित्राल नदी के पास चित्राल नगर मौजूद है। यह नगर चित्राल जिले की राजधानी भी है और चित्राल रियासत की राजधानी की साथ ही सेवा करता है। 1969 में पश्चिमी पाकिस्तान में सीधे शामिल होने तक इस क्षेत्र को शामिल किया गया। यह नदी दुनिया की सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय स्थानों में से एक है। जब प्राकृतिक सुंदरता की बात आती है तो इसके सुरम्य पहाड़, सल्फर स्प्रिंग, जुनिपर वन, दिलदार लोग और प्रसिद्ध ट्राउट मछली से भरी नदियाँ वास्तव में मंत्रमुग्ध करने वाला है। ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण क्षेत्र में से एक है। तो आइए चले जानते हैं चित्राल नदी के बारे में। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से शिमाल की जानिब कोहे हिंदू कुश के दामन में मुल्क के दिलकश तरीन इलाकों में से एक इलाका चित्राल। यहां के बुलंद पहाड़ों की चोटियां आसमान को छूती नजर आती हैं। इसकी गहरी वादियों में कैलाश के आजाद कबीले भी आबाद हैं, जो अपनी मखसूस सकाफत और रिवायत की वजह से मुनफरिद मकाम रखते हैं। चित्राल के रहने वाले बहुत मेहमान नवाज और जिंदा दिल लोग हैं। पोलो इनका पसंदीदा खेल है। अक्सर देहातों की अपनी अपनी पोलो टीमें हैं। यहां दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में मुकाबले होते हैं। इंसानी जिंदगी गुजारने के कदीमी तौर तरीके अभी भी मौजूद हैं। चित्राल गोल नेशनल पार्क भी एक ऐसी जगह है जिसे पाकिस्तान का छुपा हुआ खजाना भी कहा जाता है। ये कौमी पार्क अपने रंग बदलते मनाजिर, सीधी ढलवानों, और खास तौर पर एक बहुत ही मुनफरद जानवर मारखोर की वजह से मशहूर है। चित्राल गोल की चट्टानों पर चलने वाला मारखोर चित्राल गोल नेशनल पार्क के नाम से पाकिस्तान में बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ये हिंदू कुश के पहाड़ों में वाक़ है, जो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन इलाकों में शामिल है। चित्राल गोल नेशनल पार्क 8000 हेक्टेयर पे फैला हुआ है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो नहीं, लेकिन रकबे की कमी के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत है। इसकी चोटियों और वादी की गहराई के दरमियान 3 किलोमीटर तक का फासला है। यहां सर्दियों का मौसम तवील और सर्द, जबकि गर्मियों का मौसम गर्म और खुश्क होता है। मुश्किल मौसमों और ऊंचे नीचे पहाड़ों के बावजूद यहां पर जानवर और दरख्त बहुत बहादुरी से मौसम की सख्तियों का मुकाबला करते हैं। बुलंदी पर वाक़े चट्टानों में इस कदर कम मिट्टी है कि देवदार के दरख्तों की जड़ें जमीन के अंदर होने की बजाय सख्त चट्टानों पर फैली दिखाई देती हैं। यहाँ देवदार मुश्किल से 25 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इस ऊंचाई तक पहुंचने में इन्हें कई 100 साल लग जाते हैं। इनमें से कई दरख्त ऐसे हैं जिनकी उम्र 1000 साल या इससे भी ज्यादा हो सकती है। देवदार का अजीमुशान दरख्त पाकिस्तान का कौमी दरख्त भी है।
चित्राल गोल में पाकिस्तान का कौमी फूल चमेली, कौमी परिंदा चकोर और कौमी जानवर मारखोर पाए जाते हैं। इस पार्क के गुमनाम ये हीरो कीड़े मकोड़े हैं जो जिंदगी की जरूरत को पूरा करते हुए पहाड़ों के लिए बड़ी मामूली सी मिट्टी बना पाते हैं और इसी मिट्टी पर दूसरे जानवरों और पौधों का इन्हिसार होता है। पहाड़ों की बुलंदियों से वादियों के गहराई तक गर्मियों के आखिरी महीनों का मौसम ऐसा होता है जिसमें हर चीज निखर जाती है। पौधों और दरख्तों की बहुत सी अक़साम ऐसी हैं जो गर्म मौसम में सख्त सर्दियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती हैं। इस मौसम में दरख्त फलों से लद जाते हैं जिन्हें खाकर चित्राल गोल के परिंदे अपना पेट भरते हैं। चित्राल गोल का खूबसूरत मंजर जहां मौजूद मखलूकात को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। यहां की सीधी ढलवानों पर मुश्तमिल पहाड़ों की वजह से गर्म हवा पैदा होती है। गिद्ध जैसे बड़े परिंदों को इस गर्म हवा की वजह से ऊंचा उड़ने में आसानी होती है, जहां इन्हें शिकार करने का ज्यादा मौका मिलता है। यहां तक कि सुनहरी अकाब भी बुलंदी की आखिरी हदों को छूना चाहता है। इसे भी दूसरे बड़े परिंदों की तरह खुराक के लिए बड़ा फासला तय करना पड़ता है। यहां पर नायाब लिंक्स जैसी चालाक जंगली बिल्लियों को अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए मीलों दूर तक खुराक की तलाश में फिरना पड़ता है। भेड़िया तो मीलों सफर करने की वजह से मशहूर है। इसके अलावा वो अपने घर की हुदूद की एक खास बू से निशानदही कर देता है। इंतहाई सीधी चट्टानें शिकारी जानवरों की पहुंच से दूर होती हैं, जबकि मारखोर के लिए ये महफूज पनाहगाहें हैं। लेकिन अगर इनसे भी गलती हो जाए तो ये मरा हुआ मारखोर दूसरे जानवरों के लिए आसान खुराक बन जाता है। कव्वे इसको पहले ही ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन गिद्ध के आते ही वो इस शिकार से महरूम हो जाते हैं। जैसे ही गर्मियों का सख्त मौसम चित्राल गोल से रुखसत होना शुरू होता है, मौसम के बदलते ही पार्क के सबसे अहम जानवर मारखोर की मुश्किलात भी शुरू हो जाती हैं। चित्राल गोल की ऊंची चोटियों से मौसम खिजा की सर्द हवाएं वादी का रुख करती हैं। ये मारखोर को पैगाम देती हैं कि वो ऊंचाई से उतर आएं और सर्दियों के सख्त मौसम के लिए तैयार हो जाएं। मारखोर दुनिया का सबसे बड़ा जंगली बकरा है। नर मारखोर का वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा भी हो सकता है, जबकि इसके बल खाते हुए खूबसूरत सींग 1 मीटर से भी लंबे हो सकते हैं। मादा मारखोर कदरे छोटी होती है। यह इसके लिए फायदेमंद भी है। साल के इस मौसम में मारखोर सदाबहार झाड़ियों, शाहबलूत के दरख्त का फल और इसके पत्तों से खुराक हासिल करता है, जबकि मादा मारखोर वजन में कम होने की वजह से आसानी से दरख्तों पर चढ़ सकती है और वो नए और रसीले पत्तों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाती है। मारखोर की जबरदस्त गिरफ्त उसके 2 मुंह वाले खुरों और पांव के नर्म तलवों की वजह से होती है, जिसकी वजह से वो पथरीली ढलवानों पर आसानी से चढ़ सकते हैं।
नर मारखोर अगरचे ज्यादा ताकतवर और खुसूसियात का हामिल होता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। इसकी बजाय वो अपने भारी सींगों को दरख्त से टकराता है ताकि पत्ते और फल झड़ जाएं। ऐसा करने के बाद उस पर हक जमाना भी वो अपना फर्ज समझता है। गर्मियों के इख्तिताम पर जब वो ऊंची चरागाहों को छोड़कर नीचे उतरते हैं तो उन्हें रोजाना खुराक की तलाश में 8 से 12 घंटे खर्च करना पड़ते हैं। ये खुराक इन्हें पहाड़ों के दर्जों और नालों से हासिल होती है। मादा मारखोर अपने बच्चों के साथ किसी छोटे से रेवड़ में घुस जाती हैं ताकि दूसरे मारखोरों के दरमियान महफूज रह सके। खतरा तो बहरहाल इनके लिए हमेशा मौजूद रहता है। बड़े जानवर तो रास्ते से वाकिफ होते हैं, जबकि छोटी उम्र के मारखोरों को सीखने की जरूरत है। इन्हें न सिर्फ अपनी जान बचाने के रास्ते मालूम होने चाहिए, बल्कि इस जरूरी खुराक का भी पता होना चाहिए जो उन्हें आम खुराक में नहीं मिल पाती। ये सब कुछ इस पहाड़ी नदी के पार है। तेजी से बहता, पत्थरों को काटता हुआ ये ठंडा पानी मादनी नमकियात को वाज़े कर रहा है। मारखोर इस मादनी नमक को बहुत शौक से चाटते हैं। ये नमक इन्हें आने वाले मुश्किल महीनों का मुकाबला करने की ताकत देता है। नर मारखोर के लिए सबसे मुश्किल वक्त दिसंबर के पहले 2 हफ्ते हैं। नर मारखोर उमूमी तौर पर अकेला ही रहता है, लेकिन इन दिनों में वो एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इस दौरान इसकी कैफियत में कशीदगी और मुकाबले का रुझान बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद यह फैसला करना होता है कि किस नर ने मादा मारखोरों के साथ मिलाप करना है। मुकाबले का आगाज होता है। It's not just their size and power that counts. The terrain and their choice of standpoint can be make or break. The stakes are so high, the tension and clashes continue well past sundown. A clear winner will mate with up to 30 females.
the loser faces an uncertain future. With snow already dusting the higher slopes, life's about to get even harder. Winter is a punishing time of year. Meters of snow can blanket Chitral. The Markhor remain at lower elevations, still reliant on the Hollyoaks to keep hunger at bay. But they'll have to walk long distances across icy rock to find new sources of food. They regularly need to leave the park and feed in the adjoining valleys. And this is when wildlife and the people living around the boundary of Chitral National Park together feel the pinch. Chitrali people are very resilient. But when heavy snowfall blocks the mountain passes, they're more or less cut off from the outside world. Because it's so cold, fuel is in short supply. Families rely on what they find around them for basic needs. Like Waka Muhammad. Especially in winter, we rely on wood for cooking and staying warm. Many trees around the park have already been felled. The only trees left here are in the national park, and if they were to be cut down too, the forest would become bare and the animals would leave. It's not just wood cutting that affects the Markhor. It's hungry livestock too. Especially when nomadic herders, Gujars, bring their herds into the area. Decades ago, there was enough food for everyone. Now, it's a different story. As the winter wears on, the grazing wears out. Towards the end of winter, the Gujars even enter the national park to cut boughs of evergreen hollyoak as fodder for their animals. Keeping their animals alive is exhausting work. Hashim's 60 goats need a huge amount of food a day. They're his family's entire livelihood, but he knows the area is suffering too. These are the same hollyoaks that Markhor and other wildlife depend on. We've been coming here for 30 years. It would be impossible to survive here after a year or two. We are bound here at the moment. The forest is near to its end, and after that we will need to go beyond this place. The nomadic Gujars will move away, but local herders have no other option but to stay here. Their problems are mounting, and they need longer-term solutions. Overgrazing around the national park has had other knock-on effects too. It's reduced the amount of food for Markhor, and herders mostly blame snow leopards for picking off domestic animals instead. Predators have even stalked right into villages to attack herds gathered in stone corrals. Traditionally, villagers have protected their animals in open enclosures.
The old corral had low walls, which meant that wild animals attacked our livestock, and we suffered huge losses. The Snow Leopard Foundation, keen to improve the prospects of both snow leopards and herders, has stepped in to help. Firstly, they have helped fund new corrals. Tall, sturdy stone walls prevent predators from getting in. And the netted roof allows good ventilation for the animals, helping them to stay healthy. They fatten up much better in here. If 1 or 2 corrals are built in each community, people would be very happy, and these livestock would stay safe. The loss of any animal is a blow, but a recent survey conducted by the Snow Leopard Foundation has revealed that relatively few livestock are killed by wild predators. The results of that survey shows that the number of animals that die from diseases is very high compared to those that are killed by wolves or snow leopards. It suggests that well over 60% of livestock deaths result from ill health and malnourishment. To address this problem, the foundation is funding and teaching herders how to keep their animals vaccinated against disease. In olden times, people did not get their animals vaccinated. Today, they have it done a lot. Herders are already reaping the rewards of fitter, healthier animals. There has been a big increase in the amount of milk that owners are getting from these animals. The animals become healthy, their milk production increases, and their meat gets better. As a result, people are benefiting economically. Through raising awareness, and with relatively simple measures, the day-to-day life of local herders has improved. Now, the mortality rate in herds has decreased a lot. Now, diseases don't spread, and our herds are safe from wild animals. But there's a wider benefit. If more animals survive and are healthy, then shepherds can make a better living with fewer animals. Smaller herds mean less overgrazing. And that improves the future for wildlife in the area too. Land that was previously exhausted can be rested, and trees and shrubs allowed to grow back. The well-being of the national park is clearly tied to that of the people who live around its borders. For some locals, the mutual benefits are already very clear. I am proud of the fact that I hail from a village next to this national park. I am a part of this national park. Isra feels the direct benefits of living next to this national asset because since 2004 he's worked within it as one of 10 community watchers who help protect it. We wake up early every morning and patrol the entire area to protect it. We ensure that nobody comes from outside to cut the wood, to destroy or take away the medicinal plants, or harm the wildlife, such as the markhor. Ever since I've become a part of the wildlife department, my life has completely changed. The monthly salary I receive is quite enough for me to support my children and myself properly. But there are many other ways in which local people can engage with and benefit from conservation. In the Chitral town market, traders are doing brisk business selling tree saplings which they've grown. Some customers buy trees to make their gardens beautiful, but it's also important to replant hillsides that have been logged or overgrazed, as Akbar Ali well knows. The heritage that has been lost, it is our duty to replenish it. If we are going to clear it away unchecked, then there would be floods and other natural disasters. Landslides and floods have increased in recent years.
Planting trees helps to bind the soil and controls the runoff of heavy rain. If less topsoil ends up in the rivers, the yield from crops improves too. As well as easing the pressure on the landscape, replanting the hillsides offers ways to make money. As these trees mature, they will provide wood for fuel and fencing, a variety of high-value orchard fruits, and even fodder for livestock. Some local plants have medicinal properties. Artemisia, for instance, can be used as an antiseptic remedy, and growing them could provide an extra income stream. Another source of revenue is the hunting of large male markhor, but only in some areas outside the national park. Trophy animals, older animals with impressive horns, are raising hundreds of thousands of dollars in hunting fees. But these operations must be carefully organized and overseen, so that the financial benefits are spread fairly throughout the area. For that to happen, general awareness needs to be raised to understand how to keep the markhor population healthy and how caring for the surrounding area helps everyone. If people gain awareness, they will automatically protect it, because it will be embedded in their minds that this is for their benefit. Akbar Ali believes the best people to protect the park and its surrounding area are the locals themselves. The young generation would do this. Who else? No outsider would come and protect it. We have to be here, live here, die here, that's it. Therefore, it is our obligation to protect it. The chief conservator of the province, Safdar Ali Shah, knows that young people are vital to the future care of such a large, remote area. We run an education and awareness program at schools where we give lectures to 9th grade students and give them the message that since you will be the policymakers of tomorrow, politicians of tomorrow, this country's decision-making will be in your hands. So this is a message to our youth, that they strengthen our grip. They should become our eyes, ears, hands and feet. Their lives could be enriched from the long-term protection of Chitral Gol. We have to transfer it to our future generations, just the way it is. So that they will be happy, seeing it as it is. What else could be of greater happiness to us? It's essential that local communities engage their hearts and minds with this challenge, because the day-to-day protection of such vast, rugged terrain is a daunting job. Every day, and in all weathers, just a small handful of staff walk miles and miles, patrolling the park boundaries to make sure animals and plants are kept safe. These wardens and watchers need more resources and equipment, especially better ways for the staff to stay in contact with each other. Mobile phone signals might not reach such deep ravines. And if problems arise, the guards need to mobilize quickly and effectively. The job can be dangerous. On top of this, and even though the Wildlife Department has limited funds, they need to monitor numbers of markhor and other animals that live in the park. Together with local wardens and watchers, they climb to special vantage points, from where they can see far and wide. Twice a year we conduct surveys of all the wildlife. That includes birds, predators and other animals. There is also the lambing survey we conduct in July, focusing on markhor alone, to find out how many new fawns have been born. 1 million
These surveys are helping to build up a more accurate picture of what lives in the park. Against all the odds, and thanks to the help of community watchers like Isra, the Markhor population has risen from just over 600 in 2005 to nearly 1,400 in 2015. We have the community watchers on board with us. Therefore, our manpower has increased, protection has improved, and so the population has increased in Chitral Gol. With wildlife numbers on the up, the park could become a great draw for tourists. When we come from the cities, we are coming to feel something different. We are coming to breathe fresh air. I didn't know much about the natural park, but now I'm here and I see these trees, the mountains, and I'm so inspired. The whole view, it's beautiful. Coming here is like standing in a heavens. It gives you a serenity, like you can feel like you are out of the world. Because Chitral is so remote, it's been very hard to get to. Traffic and supplies need to be brought over mountain passes on weather-beaten roads. But big change is on the way. A much-needed tunnel is under construction, cutting through the mountain, which will improve access and boost visitor numbers. As the Lawari Tunnel gets down to the finishing stages, countless tourists would come then, because the environment here is pleasant, the people receptive. Tourists are already arriving to take advantage of Chitral Gol's stunning scenery and bringing much-needed revenue into the region. But unregulated, it could cause new problems too, of mindlessly cutting wood for campfires and much more rubbish. We have come to visit this beautiful place. The environment is clean here. However, it makes me sad that people like us come here and leave behind all this rubbish. This is sad. They should not do this. All visitors have a responsibility to clean up after themselves. We are in the process of developing a code of conduct for the tourists. Before entering the national park, people should know about the basics of the park, our prohibitions and the do's and don'ts. But at least there are good foundations to build on. It is a reflection of our success that the areas where there were only footprints of these animals but none were seen, a substantial number of these are found in those areas these days. Obviously, I feel proud, and I feel the people of Chitral should feel proud of that. Wildlife is an indicator of the health of an ecosystem. Chitral Gol is an amazing success story, and therefore a positive sign. With limited resources and in challenging terrain, staff have done wonders improving wildlife numbers within the park. Good lessons have been learned, especially the positive involvement of local people. Valuable experience which can be shared elsewhere. The next generation are well placed to carry on the good work, if they learn how special they are and how their lives will be enhanced through care of their surroundings. Then both they and the extraordinary cliff walkers of Chitral Gol can flourish well into the future.
यहाँ की संस्कृति की अगर बात करें तो ये अद्वितीय है। चित्राल में 2 नस्लीय समूह मौजूद है। पहला तो कलश, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज होने का जानकारों का कहना है। वे लगभग 3000 है जो अब दक्षिण पश्चिम घाटी में रहते हैं। दूसरा नस्लीय समूह खो है। ये लोग भी अपनी संस्कृति, शांति, प्यार, प्रकृति और अपनी अखंडता के लिए प्रतिष्ठित है। यहाँ साल के 3 मुख्य त्योहार होते हैं। ये पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य स्रोत भी है। तो दोस्तों, चित्राल नदी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्मर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।